Hello, how's it going, guys? Welcome back to another episode of the Crictime Podcast. And these podcasts are rolling out very fast for you guys. The news is coming right to your doorstep, guys. Before we get into this, thank you for all the support that you've been giving over the last few podcasts. It's been amazing. We've hit like 1.5K on one of the podcasts we did together, and then 200 on the other one as well. So just keep the support going, keep continuing supporting us, subscribe to the channel, and don't miss out on any content because by World Cup सिर्फ 4 साल में एक ही बार आता है, and that's how it has been for Pakistan. Ali joins me again, and today on a happy note, finally this guy joins me and Pakistan wins such a convincing victory today by 105 balls and 7 wickets. Exactly what Pakistan needed to lift their spirits up and break that loss streak. So your quick thoughts on overall the performance and your expectations from Pakistan. भाई ओवरऑल तो आई थिंक परफेक्ट परफॉर्मेंस फाइनली पाकिस्तान एक बैलेंस टीम लगी है भाई। मतलब मैं कब से कह रहा हूँ बैलेंस बैलेंस, एक प्लेयर पे ना रिलाई करो, अपने ओपनिंग पे ना रिलाई करो, मिडिल ऑर्डर पे ना रिलाई करो, शाइन पे ना रिलाई करो। और ब्रो जस्ट ओवरऑल परफेक्ट परफेक्ट परफॉर्मेंस। आज ऐसे लग रहा था कि दे aren't गोइंग अप अगेंस्ट बांग्लादेश, दे गोइंग अप अगेंस्ट ओवर्स ब्रो, जस्ट ट्राइंग टू गेट देयर रन रेट अप देयर। बांग्लादेश को तो बस ऐसे ही उन्होंने इग्नोर लाइट ही लिया, बिल्कुल ही लाइक द शुड। Yeah, I think realistically this was a game that Pakistan should have won the way they did. It's not something that's I wouldn't call it a special victory and say कि यार चलो कितनी जबरदस्त win थी, but this is something they should have done in this game. So I guess the only reason we can sit here and say okay, Pakistan performed well is because of the last few performances that we've seen, and that puts them fifth on the table, right there on the cusp of qualification against New Zealand and Australia. And luckily, they've got a game against New Zealand, so any one of New Zealand and Australia could be knocked out. And the start that New Zealand had, they've kind of trailed back, 2 losses on the trot against Australia once, and then obviously that India loss as well. And then they've also got Pakistan coming up, so and then South Africa as well when you guys watch this episode. So very tough to have, but do you think after seeing today's performance, Pakistan can win 3 out of 3 and say, yeah, we can qualify for the semi-finals? देखो भाई, आई थिंक न्यूजीलैंड बहुत टफ होगा। आई वुड हैव सेड इंग्लैंड टफ होगा, बट इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप इज जस्ट रियली बैड राइट नाउ। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, सो आई थिंक न्यूजीलैंड को हराना बहुत मुश्किल होने वाला है। इट्स गोना बी वेरी हार्ड। आई थिंक उनको मेन बंदे आउट करने हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को रविंद्र आउट करना बहुत जरूरी हो जाएगा, बिकॉज रविंद्र हैज बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली। तो आई थिंक रविंद्र अगर आउट हो जाए, जैसे पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ डी कॉक को आउट किया था, आई थिंक दैट वाज अ बिग विकेट, ठीक है। तो आई थिंक अगेंस्ट न्यूजीलैंड दे हैव टू गेट रविंद्र आउट, दैट्स द मेन गाय। Yeah. सो एज लॉन्ग एज दे कैन गेट हिम आउट, एंड आई थिंक पाकिस्तान ऑलवेज, मैं हमेशा ही बोलता हूँ भाई, पाकिस्तान ऑलवेज सक्सीड्स व्हेन दे आर बॉलिंग फर्स्ट। आज भी देखा, ठीक है, they bowled first. Of course, they didn't choose to bowl first. Bangladesh chose to bat first, but they bowled first. They succeeded. So I think, yeah, I think they should chase. So hopefully Yeah. they win the toss, of course. Yeah, obviously it's going to be a tough one, but before we get into any of that, by today's performance, थोड़ा बहुत उसके बात करते हैं. Very happy to see, I guess, Shaheen Shah Afridi play the way that he is, and thankfully we can say कि, or Pakistani fans can say कि, there's been consistent performances now from him. We're not seeing the patches of good performance and then back to being really bad kind of performances or just a bad game kind of thing, and exactly what you want. Because भाई बड़ा गेम हो छोटा गेम हो कुछ भी सिनारियो, आपको 2 3 या 4 वैसे प्लेयर्स होने चाहिए हर टीम में जो आपको लगते हैं भाई ये हर गेम परफॉर्म करेंगे. एंड in terms of batting, भाई Fakhar Zaman today proved कि maybe Pakistan were too quick to drop him. Maybe they should have kept him playing, and the way he played today showed कि भाई it really affected him that they dropped him. And maybe if we had seen more of Fakhar Zaman, maybe Imam would have been out of that team earlier than expected, or at least the chances that he got, he wouldn't have gotten then. हाँ भाई, फखर की तो ये बात है कि मतलब डबल माइंडेड बॉलर, बिकॉज मुझे लगता है कि उसको रेस्ट नहीं कराते तो उसकी परफॉर्मेंस आनी नहीं थी। बिकॉज आई थिंक, बट देन अगेन इमाम को खिलाना भी कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं था। आई थिंक वो could have been done, even though everyone was saying rest फखर, what could have been done is इमाम को बिठा देते, फखर एक दो मैच बेशक फ्लॉप होता, बट देन he'd get his confidence back, आहिस्ता आराम आराम से खेल के एटलीस्ट वो रेगुलर रहता। लेकिन इमाम का ये है कि उसने एक मैच में परफॉर्म किया, वो भी एज अ टेस्ट मैच करके उसने परफॉर्म किया। फखर का मैं शुरू से ये कह रहा हूँ, पावर प्ले में हमारे की प्लेयर है फखर। वो आके या तो मारेगा या फिर आउट होगा। इमाम क्या करेगा, मारेगा भी नहीं, आउट भी होगा। तो भाई अगर आउट ही होना है तो फखर आके आउट हो जाए भाई, एटलीस्ट हमारे पे होप होगी कि आके बंदा मारेगा। उसमें अब्दुल्ला शफीक से थोड़ा प्रेशर हट जाएगा, बिकॉज अगर इमाम उसके साथ ओपनिंग कर रहा है
तो अब्दुल्ला शफीक का काम है रन रेट बढ़ाना, बिकॉज इमाम उल हक तो वही टुक टुक खेलेगा अपना, वो तो टेस्ट मैच का बैट्समैन है बेसिकली। तो बस आई थिंक ये perfect time for Fakhar Zaman to come back again against Bangladesh. You know, score भी बहुत कम था, perfect time to get his confidence back, and of course great performance. He's also a very selfless player because as you saw, he's वो आराम से सेंचुरी कर सकता था टुक टुक खेल के, लेकिन उसको पता था भाई मुझे आज मारना है, मेरा आज रोल क्या है, मेरा काम क्या है। वो फखर जमान है ही मारने वाला भाई, वो मारता है, ये वो टुक टुक कभी नहीं खेल सकता। तो बस ब्रो ये I agree with you on a certain points because I think भाई पाकिस्तान का हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कुछ पॉडकास्ट पहले कि भाई how they scored their first six after what almost 1200 balls or something in the power play. They've only had what 5 or 6 sixes in the first 15 overs, and something we compared very predominantly on this podcast, and I did this with Suyesh as well. For those who watched those episodes, if you've missed out, go back to those and watch those clips because those will give you context to this. But I guess watching Rohit Sharma play the way he does right now, and the way he kind of brings the run rate, भाई 5 की रन रेट हो, 6 की रन रेट हो या 4 की भी रन रेट हो, वो इतनी नीचे ले आता है कि it becomes impossible. Even if a team takes wickets, it becomes impossible for them to be able to defend. क्योंकि realistically भाई आज की ओडीआई की गेम में 3 रन कुछ नहीं होते, तो जब रोहित शर्मा इतनी नीचे लिया आएगा पावर प्ले में रन रेट, वो फिर बॉलर्स गेम खत्म ही हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे भाई। इट्स द ओनली बैट्समैन कैन ओनली मेस अप द गेम। तो समथिंग दैट आई सॉ फ्रॉम फखर टुडे वाज भाई 6 sixes और 7 sixes ही हिट इन हिज इनिंग्स, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान नीड। भाई एक एग्रेशन चाहिए। आप अब्दुल्ला शफीक से काइंड ऑफ गाय हु विल प्ले हिज स्टाइल ऑफ प्ले, जो कि है कि थोड़ा स्लो खेलेगा, बट एट द एंड he'll come back with a top score, fifth, like I think it's his third 50, including that 113 knock as well. So somewhere you can rely on Abdullah Shafiq to play that long innings and extend the play, but at the same time आपको दूसरे एंड में एक फखर जमान जैसे चाहिए है जो अटैकिंग खेल सके, जो स्पिनर के पास जा सके, and that's the best part कि भाई as soon as you put pressure on the bowler, he's gonna mess up the line and length. And पाकिस्तान के पास यही होता है, they get bogged down with pressure and then suddenly the bowlers having a field day and they're like ठीक है भाई, पहले 2 ओवर मेरे मेडन गए यॉर्कर्स करा के, ये लाइन एंड लेंथ रख के मैं यही कराता रहूंगा और मैं अपने ओवर्स निकाल लूंगा, ये वाला हिसाब होता है। बट bit I guess a bit of a dumb move if I say from बाबर आजम। भाई क्या शॉट थी वो, बिल्कुल unnecessary shot and अच्छा, we actually let me play the devil's advocate there, ठीक है। I know I was pretty mad जब वो हुआ था, even texted you, मैंने कहा भाई बाबर क्या कर रहा है, पर I think we saw this, पाकिस्तान की इंटेंशन ही आज ये थी कि भाई हमने 30 ओवर में पूरा करना है, लेट्स से ठीक है डम शॉट थी, पर आई वोंट से इट्स अननेसेसरी। उसको पता था भाई आज मुझे अपने स्कोर का नहीं फर्क पड़ता, आज मुझे बस मारना है, क्योंकि उन्होंने इफ्तिखार को पहले भेजा, ठीक है। ऑफ कोर्स इज अ ग्रेट फिनिशर, 36 रन चाहिए थे ऑफ कोर्स, बट दैट जस्ट क्लियरली शोज कि भाई साउथ शकील को बेच के आराम से नहीं खत्म करना, हमें जल्दी गेम खत्म करनी है, ठीक है। सो देयर होल इंटेंशंस वर क्लियर, रिजवान ने भी आते मारना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स फखर और अब्दुल्ला शफीक को थोड़ा टाइम लगा सेट होने में। फखर तो ऑफ फॉर ऑब्वियस रीजंस, मैंने कितने टाइम बाद आ रहा है, तो शुरू शुरू में स्पेशली जब वो 2 ओवर मेडन हुए, तो मैंने कहा भाई आज तो पाकिस्तान रन रेट अपना खराब करके रहेगा। लेकिन हाँ, आई थिंक बाबर शॉट वाजंट गुड एट ऑल, लेकिन आई वुडंट से अननेसेसरी अटेम्प्ट टू बी ऑनेस्ट। नहीं, but I think generally he could have done better. Like ठीक है चलो 9 of 16, maybe he was going slower than required for Pakistan and the way they wanted to boost their run rate. But at the same time, it's also about being able to be on that field. और पता है सबसे बड़ा advantage क्या होता है as a batsman? जब आप पहली बात तो the biggest difference in playing in India is the fact that as a team you don't practice on the main pitches. So जो बीच में जो 5-6 pitches बनती हैं which are used for matches, they're not the pitches you practice on or the side pitches. It's the side pitches right at the boundary line. So if you look at if you guys watch the matches live and they zoom out and you see those pitches towards the end of the boundaries, that's where they practice. So you don't necessarily have the advantage or have the ability to actually practice on the wickets the ballers ball or the match is played, center stadium pe. So for Babar to maybe stay there and ke chalo theek hai, maybe I'm playing slow, but I've got I think who did he have? He had Abdullah Shafiq, or did he have, no, he फखर had नहीं, फखर था। Fakhar on the other end. भाई उसको पता था फखर अटैकिंग खेल रहा है, फखर को सही अटैकिंग बात है, खेलने दो, मैं मैं आराम से आराम से खेलता हूँ। खेलता हूँ। और मुझे उसको पता है कि भाई देखो अगर सेमीफाइनल पे जाना है तो ईडन गार्डन्स में खेलना है, इसी पिच पे। अगर आपका आई थिंक एक और गेम है, एक और आई कांट रिमेंबर अगेंस्ट हु, आई डोंट नो इफ इट्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड या फिर इट्स अगेंस्ट इंग्लैंड, जो ईडन गार्डन्स में है। सो
they knew कि भाई they have another 3 games in here या 2 games in here, so they might as well understand the conditions perfectly well. Obviously pitches थोड़ी left and right होंगी, you might use the left or the right pitch, but at the end of the day pitch तो मिलने को pitch में खेलने को मिलेगा आपको. So that was the only thing from me, my end, I guess. But other than that, obviously Rizwan and Iftikhar coming in at the end and finishing it off as well. A bit of a credit to Mohammad Wasim, but भाई मैं एक बात करना चाहूंगा, बाबर की कैप्टनसी पे बहुत सारे सवाल उठे गए हैं आज। एक बस मेरे अंदर ये डाउट था कि मे बी इफ यू ब्रॉट ऑन मोहम्मद वसीम, हारिस रऊफ एंड शाहीन शाह बिट अर्लियर, मे बी दे कुड हैव रैप्ड बांग्लादेश अप अ लॉट सूनर, 180 170 पे खत्म कर सकते थे। और मे बी ही जस्ट वाज ही स्कैर्ड कि चलो स्पिनर्स के ओवर खत्म करते हैं पहले, या अगर स्पिनर्स के ओवर मतलब फास्ट बॉलिंग ओवर्स खत्म हो गए, बैटर्स बच गए, देन एंड में स्पिनर्स को अटैक करेंगे। भाई बट मुझे नहीं यही समझा। पिछले साउथ अफ्रीका मैच में भी यही हुआ ना। फास्ट बॉलर्स हमारे खत्म हो गए, पीछे स्पिन्स हम्म। में ही बचा। सो आई डोंट थिंक इट वाज अ डम कॉल बाय ब्रिंगिंग इन द स्पिनर्स। ऑफ कोर्स पहले थोड़ा सा या तो एक फास्ट बॉलर ऐसा करके फिर, या आई डोंट थिंक इट वाज अ डम कॉल एट ऑल मैन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसको मतलब इवन दो जल्दी करने के चक्कर में हम लोग तो ऑब्वियसली हैं कि हम रन रेट सही हो, लेकिन वो उस तरह के चक्कर में वो पूर्ण मैच के हिसाब से सोच रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि कितने मतलब इनको जल्दी फारिग करना है, कि जस्ट इन केस ही गोज ऑल द वे आई डोंट वांट माय फास्ट बॉलर्स टू। अगर वो फास्ट बॉलर को सर्वाइव कर भी लेते हैं तो फिर उन्होंने आगे स्पिन को मारना है, तो बात तो वही हो गई ना। तो या तो स्पिन को अभी मारो या स्पिन को बाद में मारो। इट्स नॉट गोना मेक बिग ऑफ अ डिफरेंस, यू नो। बट मुझे लगा कि भाई चलो हैव इनफ ट्रस्ट इन योर फास्ट बॉलर्स एक टू चीज से कि लेकिन थी, चलो एक चीज लेट्स डू लेकिन मोस्ट मुझे ऑफ इट। गलत लगी है कि हारिस रऊफ को पावर प्ले में बॉल देना 5वें ओवर में, because हारिस रऊफ वैसे ही मार खा रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स विकेट्स भी ले रहा है लेकिन मार भी बहुत खा रहा है। तो उसको आप पावर प्ले में किस लिए ला रहे हो? आई नो कि शाइन ने विकेट्स ली थी, ठीक है, 2। तो उसके बाद आपके थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि चलो हारिस को ले आता हूँ, फास्ट बॉलर्स को ये नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन हारिस ने आते ही मार खाना शुरू कर दी। तो जो रन शाइन ने बचाए थे हारिस ने दे दिए, बिकॉज पावर प्ले में वो उससे नहीं बॉल होती है भाई। उसको आप 10 ओवर के बाद बॉल दो, फिर वो शायद थोड़ा सा कुछ करेगा उसके साथ। Yeah, I think I did an analysis on Haris Rauf before the tournament, and I found out that he's someone you can trust towards the end of the inning. And he's way better when the ball is reversing comparatively to when the ball is new, such as Shaheen Shah Afridi. But again, I guess Pakistan के पास और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। मोहम्मद वसीम के पास इतना एक्सपीरियंस है नहीं। आप पावर प्ले में उसको बॉल दोगे या नहीं, वो एक आपके ऊपर एक बहुत बड़ा डाउट होता है। एंड द ओनली काइंड ऑफ ऑप्शन you have is Haris Rauf, unless you want to bring a spinner on, which I don't think Pakistan wants to do that early on in the game. But I guess, yeah, overall happy performance from Pakistan's camp. They'll go home happy, but they'll also know that there's a lot of work. There's a lot of work still remaining. England, New Zealand are 2 games which could completely go off the rails for Pakistan, but also at the same time, there are 2 perfect opportunities for them to show everyone that, bhai, theek hai, we were number 1 in the world. We struggled, throughout the tournament, but we came back, and that's what great teams do. That's what the difference is between great teams and just good teams. We're talking about New Zealand, South Africa, obviously a very big and huge key game for Pakistan. And I think we can all agree that out of the 3 possibilities of Pakistan qualifying, if tomorrow South Africa win, that's going to be the best one for them. And obviously that'll only turn it to be 2 possibilities. But at least ये तो हो जाएगा कि भाई New Zealand का फिर पंगा पाकिस्तान से ही पड़ेगा, and then that game will decide it, not the net run rate anymore. So your hopes, do they lie towards South Africa, and do you think South Africa can pull it over the line, or do you think New Zealand's going to take it easy and take it home? देखो, अगर साउथ अफ्रीका प्ले like they played against Pakistan, no chance, because New भाई पहली बात Zealand तो is पुणे back. पुणे का ट्रैक है, सो इट्स गोना बी फ्लैट, इट्स गोना बी अ बैटिंग ट्रैक। ड्यू बहुत होगी आफ्टरनून में, सो आई थिंक विन द टॉस एंड यू बॉल फर्स्ट, एंड यू सेड इट वेल, यू वांट टू बॉल फर्स्ट इन पुणे, बिकॉज जब सेकंड इनिंग्स में ड्यू होती है द बॉल डज नॉट move at all. There's zero control, wides बहुत जाती है, extras बहुत जाते हैं. So in my opinion, you win the toss and you ball first Yeah, and get it out of 100%. the way. Yeah, 100%. You can trust you can trust the South African. Of course, मैं South African की साइड में तो मैं उनकी तरफ से बोलूंगा, you can trust the South African batsmen to get the job done. उनकी बैटिंग भी खत्म ही नहीं होती, उनकी बैटिंग पता नहीं एंड तक चल, बैट्समैन ही है सिवाय लास्ट 2-3 प्लेयर्स के, सब आगे मार रहे हैं, मतलब सब फॉर्म में, सब इन शेप है। तो आई थिंक yeah, you're right. If whoever wins the toss should 100% ball first. Yeah, I think that's just a given. I think there's absolutely, and then obviously again, wait, for New Zealand or South Africa, I would say South Africa have struggled in chasing. They've been quite strong in terms of being able to set a very high target and then just allowing teams to do what they want. But because by target 400 है या 350 है, teams collapse कर ही जाती है eventually. They not end up meeting the run rate. And
we saw South Africa and New Zealand actually come really close against Australia. So that could be a kind of key moment for them as well. But India could literally knock Sri Lanka out as well on Thursday when they play Sri Lanka and at Wankhede. That will be a good one, reminiscing that 2011 final. Dhoni ne jo chakka mara tha, Sri Lankans will be looking out for revenge वही stadium में. Um, I think India तो qualified है ही, but it'll also as a Pakistani fan, I'm guessing you want the confirmation कि भाई Sri Lanka is also out of this World Cup, so that at least it's easier for Pakistan now, isn't it? हाँ भाई, श्रीलंका तो बाहर निकालो सबसे पहले, एंड देन अगेन अफगानिस्तान भी हमारे पीछे थोड़ा सा वो है. ऑफ कोर्स पाकिस्तान 5वें नंबर पे आ गया है, बट अफगानिस्तान हैज प्लेड लेसर गेम्स, सो यू नो अगेन this World Cup is crazy, bro, because the fourth spot is anyone's for the taking, you know, because Australia कहाँ से कहाँ पहुंच गए, you know, no one would thought Australia is going to qualify after their first few performances. इसके बाद पाकिस्तान भी qualify कर सकता है, न्यूजीलैंड तो अभी I think it's New Zealand's spot to lose, to be honest. इसके अलावा Afghanistan, Sri Lanka, they can all, you know, qualify. So this is an insane World Cup, bro. Just amazing to see, you know. Yeah, exactly. And more than that, but there's big games coming up ahead for all of the teams. Netherlands, Afghanistan will be another interesting as well. I think Afghanistan tipping just a bit of favorites to win that. But both teams, I think when we talk about this World Cup, we'll say that both of these teams were underdogs, and no one predicted these guys to win anything. And especially the way they've played. And both of the, especially Netherlands, I guess भाई एक ओडीआई नहीं खेला था वर्ल्ड कप से पहले किसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट. कितने सारे रिजेक्शंस आए थे उनको, ऑफर्स where no team wanted to play them because realistically everyone wanted to play strong teams and strong competitors, and Netherlands were kind of just left out of it as well. Talking about Pakistan, New Zealand, the highlight of this tournament will be that game if today South Africa win. What are your expectations? Do you want Pakistan to go in aggressive, same way as they did today, and say, bhai, we don't care how strong New Zealand is, we're going to go with an approach that we have and we're going to continue with that? Or do you should Pakistan come up with a new strategy again? हाँ भाई, पहले तो सबसे पहले you know, New Zealand is in Bangladesh, right? So again, our openers need to play smarter cricket. फखर जमान ने अच्छी शॉट्स मारी, but he needs to play smarter shots. He needs to stay एंड तक, मतलब 100 तक एक भी विकेट नहीं लूज होनी चाहिए. And when it comes to our bowling, I think our bowling lineup only really works if Shaheen takes his first few wickets in the first 2-3 overs. अगर देखोगे तुम, शाहीन अगर विकेट नहीं लेगा तो हमारे पूरे bowling lineup फॉल अपार्ट कर देती है. Because लेट्स शाहीन जब विकेट लेगा तो हारिस रऊफ के लिए आसान हो जाता है, बाकी वसीम के लिए आसान हो जाएगा, स्पिनर्स के लिए आसान हो जाएगा प्रेशर डालना बैट्समैन पे. लेकिन अब शाहीन ने विकेट्स नहीं ली तो फिर मसला हो जाएगा. आई थिंक शाहीन नीड्स टू कम इन, यू नो, एंड जस्ट स्टार्ट टेकिंग विकेट्स राइट ऑफ द बैक. तो yeah, man, I expect yeah, I think it's going to be a great match, man. I think it's going to be a fighting match. Hopefully Pakistan doesn't just roll over and just, you know, take it. You know, I hope Pakistan puts up a fight and puts up a great performance, you know, and puts up a great game. But I do expect Pakistan to win that one. You know, again, दुआएं तो ज़ाहिर पाकिस्तान के साथ हैं हमारी, लेकिन you know, we can't really do much at this point as fans. You know, we're making up all these scenarios के पाकिस्तान अभी भी बाहर नहीं है, you know. But Pakistan needs to win, at least win the next like 2 games, or even if they don't qualify, at least we can say we put up a fight. You know, दूर है दुरुस्त है, whatever the saying is. I think the way I look at it is this is going to be one of the most challenging games for Pakistan this tournament, one of the toughest games. It's at Bangalore. It's a complete batter's heaven. आपको aggressive batters चाहिए है. Someone like Fakhar will have to stick there and say कि चलो पहले 10-15 बॉल मेरा सिर्फ एम ये है कि मुझे समझना है बॉल कैसे आ रही. And with the old ball, it just this is a flat road track जहाँ पे आप कोई भी बॉल डाल दो वो छक्के पे जानी है. We've seen Chris Gayle annihilate teams at Bangalore in the IPL itself. We've seen very high scores in this ground, and I guess it in a way भाई न्यूजीलैंड के आप बॉलर्स को भी निगेट कर रहे हो क्योंकि आपके पास बोल्ट, साउथी, सैंटनर ये सब फॉर्म में, एंड यू काइंड ऑफ रिमूविंग देम. बट एट द सेम टाइम भाई पाकिस्तान को भी बड़ा हिट होगा वेयर शाहीन वोंट बी एबल टू रिवर्स द बॉल, नाइदर विल रऊफ और वसीम. और फिर स्पिनर्स तो पाकिस्तान के वैसे भी अच्छे नहीं चल रहे, तो पाकिस्तान विल हैव टू कम अप विद अ स्ट्रेटजी इनसे कि भाई कैसे हर प्लेयर को एक special तरीके से टारगेट करना. You're gonna have to find the weakness of each player. Like Rachin Ravindra, he's been getting out on spin. You're gonna have to make sure your spin's on point to him. You're gonna have to make sure कि भाई Conway को आप bouncers डालो, आप short balls डालो. That's where he's struggling at. So Pakistan will have to keep these things in their mind and constantly reevaluate their strategies every few overs, in my opinion, if they want to win this game. Bobsy the king कर लेगा bro, don't worry. भाई बॉब्जी द किंग के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है सिवाय हसन अली को. आई थिंक नो वन इन पाकिस्तान राइट नाउ हैज एनी बिलीफ इन बॉब्जी द किंग राइट नाउ द वे ही इज.
बस नहीं, I think he's still been performing. He hasn't gotten 100 yet, but Babar only really performs when he starts off slow, and then आखिर में, towards the end of his innings, he starts hitting. वो four मारता है. He's not a six-inning batsman. That's okay. You don't have to be a six-inning batsman. So I think Babar is a special player. Of course, today's match, उसने गलत shot खेली, but he was in the mindset of just hitting. Because of the run rate के लिए उसने मारने की कोशिश की, and he got out. It is what it is. Next game though, there's really no excuse. There's no excuse. I mean, the next game against New Zealand, he has to put up a great score because one down स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है. वो प्रेशर डाल सकता है. ये अच्छी बात है कि रिजवान प्रेशर में नहीं आता भाई. वो भी मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर है. वो नहीं, उसको नहीं प्रेशर पड़ता. लेकिन भाई आप वन डाउन में आप नहीं विकेट जल्दी लूज कर सकते. लेट्स से अगर हमारा लेट्स से ओपनिंग लाइनअप वो फ्लॉप हो गया, तो बाबर के ऊपर ही आएगा प्रेशर. तो उसको थोड़ा टिकना पड़ेगा. ये नहीं कि मैं आते ही मतलब नेक्स्ट मैच में स्कोर put up a great score. So I think he'll do it. Let's but spinners उसकी क्रिप्टोनाइट रही है इस वर्ल्ड कप में. So I think इस तरह का उनको पेयरिंग बाबर के साथ रिजवान की या फखर की अच्छी रहेगी, तो ये दोनों स्पिन को मारते हैं. हाँ तो yeah, and then न्यूजीलैंड के पास इतने अच्छे स्पिनर्स है नहीं, so they've generally relied on what's it called, their pace attack to be able to claim those wickets, and a lot of their games that they've played are actually at Dharmshala, or which is where their fast bowlers have had good kind of areas to work on as well. So it's going to be very interesting in Bhai Pakistan, and technically that's a do or die game for Pakistan. If they win, they win. It'll be historic, but if they lose, then it's going to be the end of the world for Pakistan, and then the World Cup, I guess, for now. And there'll be a lot of questions which I'll be asking you on the end of that day, जब भाई PCB के chairman हो या PCB के selectors हो या Babar Azam की captaincy हो. So make sure you guys don't miss out on that. But that's pretty much it for today's kind of short episode. We're keeping it short for the World Cup because वह games हर रोज हो रहे हैं, हर रोज content मिल रहा है कुछ ना कुछ बात करने के लिए. So we want to make sure that we cover most of it, as well as leave some for the next few episodes as well. So yeah, make sure you guys subscribe, make sure you leave a like rating, make sure you follow us on all of our social media pages for the latest news related to ऑल cricket. ऑफ आवर सोशल मीडिया क्या, तो मेरा तो लिंक पर डालता है. ऑल ऑफ आवर सोशल मीडिया पेजेस. मेरे को पता था आने वाला ये. हाँ, भाई मेरे इसको को तो कर टैग कर करता लो है नहीं. फॉलो कर लो. Follow him as well, guys. But yeah, thank you guys for watching. Hope you enjoyed the episode. We'll see you guys next time. So then, stay safe.